Okay, so yesterday we covered, we started with this topic, data reduction. And in this feature selection method, I discussed that there is this curse of dimensionality. With the more number of dimensions, it is difficult for us to visualize them, visualize all the dimensions, visualize all the data. And also it is difficult for the machine learning model to do the things quickly. So it is always better to reduce the data, and it does not mean that if you're reducing the data you are making some features zero and you are directly deleting them. ऐसा भी नहीं है कि आप 5 में से या 10 में से आधे डाटा को उड़ा ही दो and you are deleting it and you are just saying that we are reducing it. That's not the way. There are some other smart ways to do it. We can convert that high dimensional into low dimensional by using that same data. So uske liye there are multiple things, but I discussed this graph also in the yesterday's class, that with the varying number of features the accuracy will vary. When you will be training your models with number of features, let's say that there are by default 20 features in the dataset. Try using different approaches and train your model with the 20 features and also implement these different methods that will be, that I will be teaching you, and reduce the number of features from 20 maybe to 2, 5, 7 and compare the accuracy. So this kind of a graph will be there. So there are some benefits of data reduction. There are accuracy improvements, overfitting risk reduction, speed up in training, improved data visualization, increase in explainability, storage efficiency is increased, and reduce the storage cost. Now I have few questions for you on this slide and I want answers from you people. What is overfitting and what is explainability? I want these two answers from your side. Other things are very easy to understand what's written, but I want to discuss these two terms, overfitting and explainability. Can anyone talk about overfitting? Have you ever heard about it? Overfitting? हाँ जी, नहीं सुना तो बता दो. I will discuss this topic in detail. मुझे अभी के अभी ये discuss करना है. Overfitting and underfitting, there are two terms. I want to discuss them, but I want to get an idea from you people if you have any idea about these two. Overfitting and underfitting. Any idea about these two? Anyone? No? So No, sir. okay, okay. So what happens is, when we are training a model, just imagine that we are training a model and we are plotting our accuracy graph. And uh, machine learning में क्या होता है that we have different iterations. एक basic सी understanding है. uh, I will give you simple idea related to you, that let's say that you have exam of data structures. आपने data structure पढ़ा होगा in previous semesters. Data structure पढ़ा होगा and let's say that there are 5 chapters, 5 main chapters in it. So when you have to give the exam, it might be a case that you are revising these 5 chapters again and again in a loop, right? And so it will be revision 1, revision 2, revision 3. So kind of a loop is there. In the first loop, you will cover all these chapters. In the second revision, again, you will cover all the chapters. So over time, your grasping power of these 5 chapters will increase with revision, with every revision. So that's the same case with machine learning. In this, we have different iterations of our data. Let's say that there are 100 images that are needed to be learned by the machine learning model, 100 images. And let's say that there are these 7 iterations. आपने फर्स्ट टाइम जब 100 images को मशीन लर्निंग मॉडल में से निकाला and you take the test, there are two terms called training and testing. Training and testing for a machine learning model, these are the two very famous terms. I want to discuss these two also. अब training का मतलब है that you are training your model, you are allowing the machine learning technique to go through these 100 images again and again over different iterations. अब कितनी बार आप iterate करोगे वो आपके ऊपर है, but over time this accuracy will increase. Let's say that the initial accuracy was somewhere here and over time it went up, and with the 7th iteration it gave us this accuracy, this
Like this, some accuracy will be there, and this might be the accuracy table. ठीक है, let's say 10% accuracy, 20, 30, 40, 50. तो इतना तो हो गया that within 7 iterations our model is giving around 40% accuracy. ठीक है, तो over time our machine learning model is improving, right? And जितना आप और आइटरेट करोगे ये और उतना बेटर होता जाएगा. लेट्स से ये ऐसे ऐसे आता था, एक इसकी सिचुएशन आएगी, लेट्स से इट इज रीचिंग अराउंड 70% accuracy or maybe 80% accuracy. But sometimes what happens is it it starts decreasing. ये ऊपर जाने के बजाय ना कभी कभी कैसा होता है कि बाद में थोड़ी देर बाद नीचे आना शुरू हो जाता है. ये एक्यूरेसी टेबल है जो ओवर डिफरेंट इटरेशंस इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग ओवर टाइम. तो लेट्स से आपका जो पीक आया, दैट पीक वाज अराउंड 80% विद आइटरेशंस मे बी 20. ठीक है, अब 20 के बाद अगर आपने और ट्रेन किया तो वो अपनी एक्यूरेसी गिरा देगा एकदम से. लेट्स से 30 पे आता आता वो दोबारा से 10% पे आ गया. ठीक है, एंड आई हैव सीन दिस केसेस प्रैक्टिकली व्हेन आई हैव ट्रेन्ड माय मॉडल्स इन पास्ट. बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया दैट ऐसा नहीं है कि आप बस आइटरेशन बढ़ा दोगे तो आपकी एक्यूरेसी एक बार ऊपर आई तो वो ऊपर ही जाएगी एंड इट विल रीच 100% विद increasing trend. Because till 7th iteration we are seeing a trend that the graph is going upsides, right? And it is going up, let's say till 20th of iteration, but on 21st iteration it started decreasing, and over time it decreased. With 30 iterations it came to 10%. तो इसमें हो क्या रहा है, इस चीज को हम बोलते हैं ओवरफिटिंग. ओवरफिटिंग इसी को कहते हैं, वी आर ओवर ट्रेनिंग. ठीक है, ओवर ट्रेन कर रहे हो आप, and your model is model's accuracy is decreasing, so accuracy decreases. एंड सेम अबाउट अंडरफिटिंग. अंडरफिटिंग इसका बिल्कुल ऑपोजिट है. उसमें क्या है कि लेट्स से दैट यू आर ट्रेनिंग योर मॉडल, लेट्स से यू वांट टू फिट दीज लाइंस, दीज पॉइंट्स इनटू ए कर्व. ठीक है, तो अगर तो आप इस कर्व को फिट करने के लिए बस एक सीधी लाइन मार दो ऐसे कि जी बस हो गया अपना काम, माय वर्क इज डन एंड all the points are generalized by this single straight line, तो इसको हम बोलते हैं अंडरफिटिंग. ये ओवर फिटिंग, अंडर फिटिंग, कर्व फिटिंग के अंदर आता है, वो तो पढ़ा है मतलब हमने। हाँ जी, ये कर्व फिटिंग ही है. वी आर एक्चुअली, मशीन लर्निंग होता क्या, मशीन लर्निंग इज एक्चुअली कर्व फिटिंग ओनली. मशीन लर्निंग का मतलब ही ये है दैट ओवर टाइम you are trying to fit a curve in the data so that for the future data we can do the prediction. हाँ जी, आज से गलती से कोट हो गया था माइक में। ओके. तो देखो बेसिक आइडिया ये है कि ओवरफिटिंग में आप ओवर ट्रेन कर रहे हो और उस चक्कर में क्या हो रहा है कि आप पॉइंट, हर पॉइंट के पास जा रहे हो एंड बहुत ज्यादा कर्व्स आ रहे हैं हमारे डेटा, हमारी स्ट्रेट लाइन बनने की बजाय बहुत ज्यादा कर्व बन रहे हैं. एंड ओवर टाइम अगर आपके इतने कर्व बन जाएं, व्हेन यू विल हैव टू मेक ए मैथमेटिकल इक्वेशन अबाउट दिस, it might have multiple variables. Let's say that for every curve I increase the power of x. This is curve 1, this is curve 2, this is curve 3, this is curve 4. तो हम ऐसे करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, x square 4, 3, 2 and this, and let's say some constant number 1. तो इसकी जो हमारा ऊपर ग्राफ बना है इसका ये इक्वेशन बन गया. एंड फॉर a straight line everyone knows the equation will be y equal to mx plus c. तो मैं एक सिंपल सा ऐसे इक्वेशन लिख देता हूँ, y equal to x plus c, considering that slope is 1 at this point. तो इसमें क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके ऑर्डर ऑफ इक्वेशन है जो वो रेस्ट पर 4 तक जा रहा है, एंड ऑन राइट हैंड साइड अंडर फिटिंग में सिंगल एक x के साथ काम चल रहा है. ठीक है, बट नाउ नीदर दिस वन इज परफेक्ट, ओवरफिटिंग वाला भी परफेक्ट नहीं है, नॉर दिस अंडरफिटिंग वन इज परफेक्ट, बिकॉज इसमें भी लॉस तो हो ही रहा है. यू आर नॉट फिटिंग द कर्व इन ए गुड वे. तो आपका गुड कर्व क्या होगा और मे बी आइडियल कर्व क्या होगा जिसमें अंडरफिटिंग भी ना हो, ओवरफिटिंग भी ना हो,
and it's not that you can achieve this ideal state, but you can try to reach this good state. जो आपका good fit होगा, that good fit will be something like this. Let's say that these are the points. तो आप इसमें बहुत ज्यादा कर्व भी मत डालो और बिल्कुल सीधा भी मत रखो, तो मे बी अगर आप सिंपल ऐसे कर दो, तो दिस इज काइंड ऑफ बेटर देन अंडरफिटिंग एज वेल एज ओवरफिटिंग। ठीक है, तो यू आर नॉट पुटिंग सो मच ऑफ कर्व्स, उससे क्या हुआ, वो ज्यादा ओवरफिटिंग भी नहीं हुआ। आप सही टाइम पे बीच में रोक दो। अब क्या होता है ओवरफिटिंग, जैसे मैंने आपको बताया दैट लेट्स से हमारा 80% अचीव हो गया था, बट आफ्टर दैट इट स्टार्टेड डिक्रीजिंग। सो विद दिस ट्रेंड वी कैन से दैट अगर हम अपनी ट्रेनिंग यहाँ पे रोक दें, लेट्स से मैं 20 पे ही 20 इपॉक 20 इटरेशंस पे ही अपना काम रोक देता, then obviously my model would have given me 80% accuracy, right? And इसी चीज को हम बोलते हैं अर्ली स्टॉपिंग। If you have trained your model, let's say you were training your model and till 7th iteration you achieved 40% accuracy, and maybe till 20th iteration you reached 80% accuracy at this point, but after that it starts decreasing. So it is better to stop at this point so that we can save our model at this point and we can say that yes, my model is giving 80% accuracy. Now because you're not going till 30 or maybe 40 iterations, you are stopping at 20. This concept is called early stopping it and it helps in reducing the overfitting, because overfitting का मतलब क्या है कि आप ओवर ट्रेन कर रहे हो, आप अपने मॉडल के कर्व बढ़ा रहे हो for the equation that is trying to learn the data. So that is overfitting. Now second thing I wanted to discuss on this slide was explainability. Can anyone tell me what is explainability? Any idea about this? If you ever have any heard, if you have ever heard about this term, explainability. This is a very new term in AI. New means 3-4 years old, not much. And it is also called XAI, explainable AI, explainable artificial intelligence. It is actually part of this explainability. XAI is part of this explainability only under this branch. Explainability means that uh, let's say that you are applying for a credit card. Okay, let's say that you are applying for a credit card in HDFC Bank, and there were some parameters जिसमें your salary, married or not, uh, how many children, how many people are dependent on you. These kind of questions were there, and in the end, answer was yes or no. That you must be given the credit card, or you do not, you can't be given the credit card based on some points system, right? And obviously, if I know for a fact that American Express is the bank that is using machine learning, and also I'm just predicting that maybe HDFC will also start doing the machine learning, but American Express is one of the bank which is using machine learning to make the decisions like this. तो अगर आपको suppose credit card नहीं मिलता, ठीक है, let's say that they made a decision based on some machine learning algorithm that you will not be given a credit card based on their model's prediction. Their model has predicted 0 for you and maybe 1 for your friend. ठीक है, तो आपके फ्रेंड को क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा बट आपको नहीं मिलेगा. Then obviously if you go as a customer to that particular bank and you ask that why am I not given this credit card, they should have a explanation, right? अगर वो ये कहें कि हमने मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करा हुआ है, उसके हिसाब से आंसर है कि 0 एंड यू विल नॉट बी गिवन क्रेडिट कार्ड बेस्ड ऑन माय मशीन लर्निंग मॉडल, then obviously that customer will sue this bank and maybe they will have to pay a heavy price for not giving him credit card and giving that kind of a reason. तो उसमें क्या होता है that we expect that this machine learning model should give me some explainability for making the decision. अब उसने उसको नो बोला, पर क्यों बोला, ठीक है, वो क्यों के ऊपर हम डिस्कशन करें या फिर हमें समझ आए कि वो डिसीजन उसका नो है पर क्यों है. फॉर दैट थिंग
explainability is one of the topic. ठीक है? And you will find lots of research papers in explainable AI if you go and search about it. And it is mainly about deep learning, but it is also applicable on machine learning. And it simply means, I will give you one more example, a simplified example of this one only. Let's say there were initially 6 parameters, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? There were 6 parameters, but आपने data reduce करके उसके सिर्फ 2 parameter बना लिए, ठीक है? आपने उसको डाटा रिड्यूस किया, डाटा रिडक्शन से आपके फीचर 1 एंड फीचर 2 पे आप ले आए। एंड ऑब्वियसली अगर आपने इसको मॉडिफाई करके 6 फीचर्स को अगर 2 में ले आए, देन यू कैन मेक ए 2D graph and make some this kind of a line, and you can say that above this line credit card will be given and below this line it will not be given. तो आप कल को अगर कस्टमर को बोलोगे यार हमारे पास ये ग्राफ है जिसके हिसाब से बेस्ड ऑन दिस फीचर 1 एंड फीचर 2 आपका कट नहीं है कि आप इसके ऊपर आ पाओ, इस लाइन से ऊपर आ पाओ, आपका पॉइंट यहाँ पे है, इंस्टेड अगर वो यहाँ पे होता देन वी वुड हैव गिवन यू क्रेडिट कार्ड। तो देन स्टिल दैट कस्टमर विल बी हैप्पी कि ठीक है मेरे को एटलीस्ट रीजन पता चला एंड आई कैन वर्क ऑन इट, ठीक है? तो अगर आपके बहुत सारे फीचर्स हैं, 6 तो बहुत कम है रियल वर्ल्ड डेटा सेट के हिसाब से, 6 फीचर्स आर आल्सो वेरी लेस। रियल वर्ल्ड में मे बी देयर आर 100 फीचर्स, मे बी देयर आर 600 फीचर्स, maybe there are 10,000 features, maybe more than that, ठीक है? And you are able to reduce the number of features to this point so that you can make a graph out of it and you can explain it to the customer that yes, because of this graph you are not making the cut to get the credit card. So this kind of explainability is what we mean by increase in explainability of ML model, ठीक है? With the reduced data you can explain your model better. That was the main idea. Now there are multiple methods. Feature selection, feature selection ka method is filter method, wrapper method, embedded method. And for extraction we have 3 methods: PCA, SVD and LDA. And we will discuss these 3 in detail after these 3. So these 3 are very small. I mean I will cover these 3 methods in next 10-15 minutes and then we will start with the PCA. But these 3, PCA, SVD and LDA, are very, very important. I will again say it. There are direct numericals that will be generated out of these topics. So from your end, lots of hard work will be required on these 3 topics. Now let's talk about feature selection. Feature selection in machine learning. अब देखो क्या हो रहा है, हमने 2 चीजें करनी है। यहाँ पे 2 टर्म्स हैं अपने पास। The terms are feature selection and feature extraction, ठीक है? अब सिलेक्शन का क्या मतलब, एक्सट्रैक्शन का क्या मतलब है, we will look into it. Feature selection देखते हैं. So feature selection is in machine learning is to find the best set of features that allow one to build the useful models. इसमें हो क्या रहा है? Let's say that you had these different features, feature 1 2 3 4, but out of these, let's say हमें पता चला किसी तरीके से कि यार ये वाला हमारे काम का नहीं है, तो हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। रेदर हम सिर्फ 1 2 3 को रखते हैं, ठीक है? सिर्फ 1 2 3 को रखते हैं and we will do the work with these 3 only. So we have selected the features 1 2 3 out of 1 2 3 4, ठीक है? इसका मतलब ये है कि हम बेस्ट सेट ऑफ फीचर्स को ढूंढ रहे हैं that will allow my model to build a useful thing, right? And the two main features, the two main things that are helpful in making the decision are these 2 points: maximizing the feature elements and minimizing the feature redundancy. देखो पहले ये वाला छोटा पॉइंट है, इसको डिस्कस करते हैं। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? लेट्स से दैट these 1 and 2 were interrelated in a way. Let's say maybe I gave you the example initially also. Let's say in a classroom there are 5 tables. How many tables are there? 5, and chairs are also 5. And we will assume that in that particular classroom only 1 chair is required for a table. So if there are 5 tables and 5 chairs, maybe 10 tables and 10 chairs, then obviously these two are very mathematically and numerically exactly same. So we can delete one of the feature because it is redundant. Both of them together are redundant for each other. Maybe we can remove one out of them and we can get the work done, and in a way we are reducing the data set to a smaller dimension, ठीक है? एक तो ये हो गया.
Second thing is maximizing the feature relevance. Now, feature contributing significant information for the machine learning model, strongly relevant, or it is giving little information, it is weakly relevant. If it is giving no information, it is irrelevant. ठीक है, तो आपने ये देखना है that if based on the amount of information that is giving that it is giving, उसके बेसिस पे हमने डिसीजन लेना है to keep the feature or not to keep the feature. Okay, so these are the different things that we require to understand for doing the feature selection. If you have any doubt on this slide, you can ask right now. Okay, moving to, सर yeah, जैसे आप जो बता रहे हैं कि फीचर सिलेक्शन में ये हम लोग मैन्युअली करते हैं कि लाइक कोई उस मॉडल के थ्रू करते हैं? दोनों तरीके हैं. We can do it through the models also. There are multiple models that have already been designed in Python that help us to do the feature selection. ठीक है, वो वाले मॉडल्स में से PCA, SVD, LDA तो है ही. ठीक है, इन ए वे वो भी तो हमारा वो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं. एक्चुअली दीज थ्री आर एक्सट्रैक्शन ऑफ फीचर्स. दे आर कन्वर्टिंग आवर फीचर्स इनटू डिफरेंट स्पेस. बट फीचर सिलेक्शन के लिए भी होते हैं. देयर इज वन मेथड कॉल्ड स्मॉट एनालिसिस होता है एक. उससे हम देख लेते हैं कि हमारा फीचर कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है. ठीक है, यू कैन सर्च अबाउट दिस एंड देयर ओके आर सर। अदर मेथड्स आल्सो. ओके, सो फीचर सिलेक्शन का एक और मतलब यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है. लेट्स सी. So let's say that we are talking about a student database where we have their roll number, age, height, and target variable weight. Objective is to predict the weight. Now, obviously, we know that for using age and height, we will be helpful. I mean, we will get the help from these two things, age and height, to predict the weight. Okay, depending on age and height of a person, depending on gender also, weight can be predicted. But how does roll number help us, right? Roll number is not helping us to predict the weight of a person. Roll number तो चीज ये अलग है. तो this is kind of redundant for us. We will not use it. ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें देख के पता चल रहा है कि रोल नंबर का कोई काम ही नहीं है अगर हमने वेट प्रिडिक्शन करनी है. Now there is this method called uh, क्या गया, yes, this one, mutual information. So this is one of the method, mutual information. And mutual information से भी हम पता कर सकते हैं कि हमारे लिए वो फीचर कितना रेलिवेंट है. अगर हमारा MI की वैल्यू में mutual information is higher, then obviously it is useful for us. And if it is not a good number compared to the threshold value that we have kept, so we can maybe delete that feature depending upon the mutual information between the different features. So let's see that feature relevance is gauged by the amount of information contributed by features. Uh, it is measured in terms of mutual information, and mutual information has this formula. Uh, MICF equal to HC plus HF minus HCF. So where C is the class variable and F is the uh, feature set taking the discrete values. ठीक है, तो आप इसमें calculate कर लोगे depending on the equation. So this is the equation that if you want to calculate the HC, the marginal entropy of a class, you can put it into this formula. And similarly, you can do it for a single F or maybe C and F combined in this same formula, and you will get the values. Okay. And whatever value you will receive on MICF, that will help us make the decision that if that feature is relevant or not, if it should be kept or not. And if MI value is low, we can delete that feature. So feature redundancy is measured in terms of similarity information contributed by the features, and these similarities can be calculated based on these two things, correlation and distance based features. Let's see. So this formula is correlation. We have discussed this earlier also. uh, I told you that this is positive correlation, this is negative correlation depending on the slope, depending on the slope. And this data, because it is scattered, we cannot fit a straight line in this. So there is no correlation in this because we cannot actually
get the curve fitting into this, and all the features are different from each other. So this is one technique, and remember this, that my correlation is in the range of -1 to 1, and let's say the threshold value is 0.8 for +1 and minus 0.8 for, obviously if my threshold is 0.8 on the positive side, it will be minus 0.8 on the negative side. It means that if my correlation is zero point 0.9 between two variables, obviously I can delete one of the feature variable, and because they have a very high correlation between them, and they are very similar to each other. There are distance based methods also. The most commonly used distance metric is Minkowski distance. This is the formula, and there is this Euclidean distance, Manhattan distance. So uh, I mean, this is how we can calculate depending on the R value. If you will change this R value to 1, it will be Manhattan distance. And if this R value inside the equation and this one, this R also, if it is 2, it will be Euclidean distance. So out of this Minkowski distance, you can calculate two kinds of distance, Euclidean and Manhattan, depending upon what the value of uh, R is. And if R is equal to 2, it is called L2 norm. And if R is equal to 1, it is called L1 norm. It's just a way of representing the same thing. There is this cosine similarity, having the formula feature 1 into feature 2 divided by this mod of feature 1 and feature 2. This is also one of the method. There are other methods also from distance point of view: Hamming distance, Descartes distance, simple matching coefficient. So all of these are self-understandable. I mean, you have to first understand that this, where n11 and n00 represent the number of cases where both features have values 1 and 0. I mean, even if you leave this statement, the main statements are these two, because we need to understand that what this 10 and 01 means. And 10 denotes the case where feature 1 has value 1 and feature 2 has value 0. And similarly, if feature 1 is having value 0, and depending on these conditions, we can input them in this one and this one. So this Jacquard and SMC are kind of interrelated with each other in a relationship to this N10, N01, N11, and N00. So these are the different things that we needed to discuss. So overall feature selection process is that depending on the original set, when the subset, we will make a subset. Okay, we are kind of making a subset out of the features, and then we will also evaluate them. We will evaluate each subset, and depending on the goodness of the subset कि वो कितना अच्छा है. Let's say that there are 10 features, but we are making different subsets. आपने 4 का बना लिया, 5 का बना लिया, 6 का बना लिया, तो आपने अलग अलग सबसेट बनाए और उनकी गुडनेस को हम टेस्ट कर रहे हैं. गुडनेस कैसे टेस्ट करेंगे? We are checking the goodness of that subset depending upon the accuracy of the model, that how much accuracy it is giving. So when we will start training our models, and we will be able to monitor that this is how the accuracy is, so that's how we will calculate the goodness of this subset, and depending on that, we will make the final decision. Obviously that will take a lot of time, but that is one of the way to do the feature selection. So now there is one more approach which is called filter approach. ठीक है, हमने सिमिलैरिटी बेस क्या देख लिया, अब सिमिलैरिटी के बाद फिल्टर है. फिल्टर में क्या कर रहे हैं हम? In this approach, the filter subset is selected based on statistical measures. So we have to work on some statistical data. ठीक है, and no learning algorithm is employed to evaluate the goodness of features selected. So we are not applying any learning algorithm. Commonly used metrics are correlation, which we have discussed already, chi-square, Fisher score, ANOVA, information gain. So these are the different valuation metrics that are required to find this filter approach and apply it. So filter method का मतलब यही है that we are selecting the best features. We are filtering based on these statistical scores. Correlation को तो हमने already detail में discuss कर लिया है. But if you go into the mathematical detail of chi-square, Fisher score, ANOVA,
I mean, I will not go into the statistics in this, but I can only say that these are the different methods that can be used to make the decision if the feature is good or bad, and we can leave it or keep it depending on that. So there is one more method called wrapper approach in this. And in wrapper approach, what we are doing is we are applying the learning algorithm and selecting the features iteratively, and then getting the feedback from the learning algorithm. Depending on that feedback, we are making the decision again and again to improve the number of features. So in this approach, for every candidate subset, the learning model is trained and the result is evaluated by running the learning algorithm. Computationally, it is very expensive. Obviously, we are training our modeling again and again. It is being done in a loop, but the accuracies are superior. ठीक है, जो भी आप attain करना चाह रहे हो, the results will be superior compared to uh, just simply selecting it randomly. And it requires some method to search the space of all the possible subsets. Obviously, if there are 10 features, then you have to make multiple subsets, and there might be lots of different ways the subsets can be made, and all of them have to be checked to make this method possible. So there is one more method called wrapper approach, searching methods. In this, we can use the forward feature selection, backward feature selection, and exhaustive feature selection. These three are the methods. This is an iterative method. This first one is a iterative method, and where we start with the best performing variable against the target, and next we select another target variable that gives the best performance. So we are trying to change our target variable one by one to get the work done in a better way. It is forward feature selection, and backward is that we start with all the features. इसमें क्या था कि आप क्या कर रहे हो, एक एक फीचर उठा रहे हो, उसको ऐड कर रहे हो, मतलब पहले 3 के ऊपर टेस्टिंग करी, फिर 3 के बाद एक चौथा ऐड हो गया, फिर 5वां ऐड हो गया, फिर 6वां ऐड हो गया। तो अगर तो वो फीचर ऐड करने पे हमारी एक्यूरेसी बढ़ रही है तो उसको रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। बट इन बैकवर्ड वाले में क्या हो रहा है कि आप इनिशियली 10 के 10 को रख लोगे, ठीक है, इनिशियली सारे आगे, उसके बाद वी विल स्टार्ट आई मीन रिमूविंग we will start removing one by one, and we will get the accuracy in a better way. तो जिसको हटाने पे accuracy बढ़ रही है वो हट जाएगा, वरना नहीं हटेगा। इसमें शायद I think one of the point is missing here. The point is simple, that you have to remove the feature one by one and you have to get the work done. Exhaustive feature selection means that it tries every possible combination. इसमें brute force लग रहा है. You are trying every possible combination and you are trying to get the best result out of it, but obviously it will take a lot of time. There is this one more approach called embedded approach. These methods encompass the benefits of both wrapper and filter method. It includes interactions of features but also maintain reasonable computation cost. तो इसमें क्या हो रहा है, obviously वो mixture हो गया wrapper और filter का. As you can see from the graph, this figure itself, you are making the subset also, but you are also parallelly checking the accuracy and performance from the model. ठीक है, तो आप सबसेट के ऊपर काम कर रहे हो, तो ये थोड़ा फास्ट हुआ क्योंकि आप पूरे के पूरे डेटा सेट के ऊपर नहीं बार बार लगा रहे, बट इन दिस केस यू आर अप्लाइंग द रैपर एंड फिल्टर मेथड. Now we will talk about the feature extraction. Feature extraction has different three methods. uh, they are PCA, SVD, LDA. Let's discuss about it. We will discuss the basics, and I will try to cover PCA today itself, and then we will continue with the other two techniques on Monday. So feature extraction creates new features from a combination of original features. इसका मतलब ये है कि let's say that you had feature 1, feature 2, feature 3, ऐसे करके आपके पास 4 feature थे, but now if you are converting them into different space, it might be S1, S2, S3. आपने फीचर की शक्ल ही चेंज कर दी. इसका मतलब ये है, फर्स्ट लाइन का मतलब ही ये है that you are creating new features from a combination of original features. You are taking the combinations and creating new features. ठीक है, आपने features ही change कर दिए. You have taken them into a new space. Now for a given feature set, the feature extraction finds a mapping function that maps it into new feature set
f1 dash, f2 dash, f3 dash, up to fm dash, such that this and this. आपने करना क्या है, obviously function of fi ही होगा ये हमारा f of I dash, but you have to take care that if number of features were m equal to 4 here, this n, no, this is n, this is the original number, but the final number which is m should be less than 4. It should be 3, maybe 2. तो जितना भी आपका n था उससे आपने छोटे रखना है. So here my 3 is less than 4. ठीक है, तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है that mapping करनी है, but make sure that your new features are lesser in number compared to the original number of features. So for instance, this equation f1 dash is equal to k1 f1 plus k2 f2. I will discuss this equation later on. We will go through different variations, but now these are the three different methods that we need to discuss: PCA, SVD, LDA. Has anyone heard about PCA? PCA is a very famous technique. It is very famous since 15-20 years now. Lots of research papers, hundreds of research papers, even thousands of research papers have used PCA technique to reduce the number of features. And if you people have used MATLAB, even MATLAB has it. You can apply PCA by just clicking one button. So has anyone heard about PCA? Anyone out of you? Hanji? Has anyone does anyone have any idea about this PCA in advance? I will talk into the mathematics of it. I will make you understand everything, but I want to get an idea from you people if you have ever heard about PCA. हाँ जी बताओ जी. It means no. So let's see. Now PCA means that it is a technique of dimensional reduction which performs the said task by reducing the higher dimensional feature space into lower dimensional feature space. What can you understand from the figure below? Just by looking at this figure on the right hand side of this arrow, what can you understand? क्या हो रहा है यहाँ पे? Anyone? Just by looking at the figure. सर यहाँ पे डिफरेंट शेप्स को अलग अलग क्लासिफाई किया गया है और अलग अलग कलर्स दिए गए हैं. यहाँ पे देखो हमने क्लासिफाई तो नहीं किया, अभी तो क्लासिफिकेशन नहीं हो रही. हमने यहाँ पे कोई लाइंस ऐसे नहीं मारी कि ये क्लास 1 है, क्लास 2 है, क्लास 3. तो क्लासेस आर नॉट डिफाइंड राइट नाउ, बट यहाँ पे आपने और क्या बोला? सर शेप्स हैं डिफरेंट या शेप्स फिर हैं. कलर. यस यस पेरेंट्स के बेस पे जीन डिफाइन करा शायद. यस, जीन्स तो है ही है. अब देखो क्या हो रहा है, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड हो क्या रहा है. यहाँ पे सिंपल चीज ये है, इन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स, दिस इज 3D एंड दिस इज 2D. यहाँ पे डायमेंशनल रिडक्शन की गई है. Left hand side पे as you can see there are gene 1, gene 2, gene 3. There are 3 genes and the graph is 3D. In a way some points are in air. कोई ऐसा तो नहीं है कि जमीन पे सारे यानी फ्लैट उसी जमीन पे पड़े हैं जो हमारा हमने प्लेन बनाया है. It is in air compared to that plane, right? And it is in 3D space. But on the right hand side, after applying the principal component analysis, we can see that the new features are PC1 and PC2. प्रिंसिपल कंपोनेंट 1, प्रिंसिपल कंपोनेंट 2, इनकी फुल फॉर्म यही होती है. PC1 का मतलब है प्रिंसिपल कंपोनेंट 1. Similarly, this one is PC2, principal component 2. So these are the two principal components which has converted that 3D dimension graph into 2D space, and now we can clearly see that 4 clusters have been formed. Obviously by applying some condition, by applying some mathematical equation, you can easily differentiate between these 4 spaces, right?
मे बी आप ऐसे करके बना सकते हो, just by using these 4 graphs you can easily classify between the 4 classes, but this is only possible because the data has been converted into 2D. यहाँ पे तो नहीं कर सकते थे, इस 3D में तो नहीं कर सकते थे ये वाली चीज इतनी सिंपल तरीके से, इतनी आसानी से तो क्लासिफिकेशन नहीं हो रहा था अपना, ठीक है। तो just to make our job easy, just to make our classification easy, we have converted our 3D data into 2D, which has helped us, which has helped our machine learning model to classify the things easily. जब आप machine learning model train करना शुरू करोगे, you will look that you will find in your computers that when you're training your model, it will first of all take lots of time to train a model if the data is large, if the dimensional if the dimensions are very large, let's say 10 or maybe 50 or maybe 100 depending upon the data. हो सकता है कि आप MNIST dataset पे काम कर रहे हो. MNIST dataset is very famous digit recognition dataset. उसमें क्या है कि handwritten 0 1 2 3 ऐसे करके ना up to 9 हर digit का images हैं, मतलब 6000 images of each class in the training dataset. मतलब हर बंदे की 6000 लोगों की उन्होंने 0 पकड़ के फोटो लगाई हुई है, ऐसी उन्हीं 6000 लोगों का 1, उन्हीं 6000 लोगों का 2, तो ऐसे करके 60,000 images का वो डाटा सेट है, 60,000. एंड डाटा सेट का इमेज है साइज 28x28. जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ डाटा इन ट्रेनिंग. टेस्टिंग में भी ऐसी है. टेस्टिंग डेटा सेट में वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आप इस पे ट्रेन करो एंड देन do the predictions on these 10,000 images and check your accuracy. So when you will have lots of data and if you flatten that 28x28, you will get 784 points, 784 एक्सेल पॉइंट्स. अगर आप उसको रो में एक रो में डाल दोगे एक्सेल के, तो यहाँ पे तो सिर्फ 3 ही फीचर्स की बात हो रही है और यहाँ पे तो वो 784 हो जाएंगे, 784 फीचर्स हो जाएंगे ना अगर हम कॉलम वाइज बात करें. तो जस्ट इमेजिन द कॉम्प्लेक्सिटी दैट यू विल गेट इनटू. तो पीसी हमारा बहुत हेल्प करता है टू कन्वर्ट दोज बिग नंबर्स इनटू स्मॉलर नंबर्स सो दैट आवर मॉडल कैन लर्न बेटर एंड क्विकर. तो देयर आर सम मेजर फैक्ट्स अबाउट पीसीए. Principal components are the new features that are constructed as a linear combinations or mixtures of the initial feature set. ठीक है, या तो वो मिक्सचर बना देगा मल्टीपल चीजों का, मल्टीपल फीचर्स का. जैसे सपोज आपको आपके पास हाइट एंड वेट है तो आप बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है. तो या तो वो ऐसा कुछ कर देगा या फिर वो कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन बना देगा डिपेंडिंग ऑन उसका बैकएंड पे क्या प्रोसेसिंग चल रही है. नाउ दीज कॉम्बिनेशंस आर परफॉर्म्ड in such a manner that all the newly constructed principal components are uncorrelated. I told you that correlation value R has a range between -1 and 1. ठीक है. And I also told you if the threshold value is 0.8 and अगर 0.8 से ज्यादा हमारे पास कोई 0.9 या 0.95 में भी 0.85 भी आ रहा है तो हम बोलेंगे कि यार ये आपस में ना काफी ज्यादा कोरिलेटेड है एंड वी कैन लीव वन ऑफ द फीचर आउट देयर डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ऐसा भी हो सकता है कि 0.95 हम ले रहे हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू, किसी में 0.8 ले रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि आप कैसे डिसीजन मेकिंग करना चाहते हो. बट अगर आपका 0.9 आ रहा है, 0.95 आ रहा है, इट मीन्स कि वो कोरिलेटेड है. एंड कोरिलेशन नहीं होगा इसका मतलब यही है दैट ऑल द प्रिंसिपल कंपोनेंट्स दैट आर कंस्ट्रक्टेड आर अनकोरिलेटेड. मतलब क्या, जो मेरा PC1 है और PC2 है जो हमने पीछे देखा था ग्राफ में, दीज टू हैव ए कोरिलेशन वैल्यू विच इज वेरी लो, मे बी 0.01, मे बी 0.2. ठीक है, मतलब वो बहुत ज्यादा नंबर नहीं होगा, वो 0.8 ना माइनस में ना प्लस में, ना 0.9 ना 0.95, उस लेवल का तो होगा ही नहीं. जब आप इसको प्रैक्टिकली करके देखोगे यू विल सी दीज काइंड ऑफ नंबर्स बिटवीन द कोरिलेशन, उसमें कोरिलेशन होगा ही नहीं, बिल्कुल ये अलग होंगे आपस में. ठीक है. Together with the reduction task, PCA also preserving as much information as possible for the of the original dataset. PCA देखो करता है convert, it converts into new dimensions, it converts F1, F2, F3 into PC1, PC2, but it also keeps the values preserved. अब ऐसा नहीं है कि वो मतलब उसकी ओरिजिनल वैल्यू खत्म कर देगा.
वो अपने आप से कोई न्यू नंबर नहीं बना लेगा. देयर विल बी ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन द PC1 एंड F1 F2 F3, एंड अगेन द वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन PC2 एंड F1 F2 F3. तो बहुत सोच समझ के ही वो कन्वर्जन करेगा. तो मेनली थिंग पॉइंट टू रिमेंबर ऑन दिस स्लाइड इज दैट प्रिंसिपल कंपोनेंट्स आर अनकोरिलेटेड. आपस में उनका कोरिलेशन बहुत ही लो होता है. Now there are these features, these points also. They are usually denoted by PCI. जैसे मैंने पीछे बोला कि PC1, PC2 are principal components. तो ऐसे ही वो ज़्यादा भी हो सकते हैं. But generally PC1, PC2, PC3 तक काम खत्म हो जाता है. उससे ज़्यादा अगर आप रख भी लोगे ना, let's say आप PC4, PC5 भी रख रहे हो, मे बी PC10 तक जा रहे हो, आप देखना उनका कंट्रीब्यूशन भी फिर मतलब आप प्रिंट करवा के देखना कि इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, इसका कितना कंट्रीब्यूशन है. एंड आई मीन ऑब्वियसली यू विल हैव टू डिस्कार्ड दीज 6-7 extra principal components because they will not contribute much into the final answer. The major proportion of information about the feature, this original feature set, can be alone explained by principal component 1. I will show you this in the next slides also. I have one numerical for you. So उसमें आप देख लेना, जब आप PC1 और PC2 को कंपेयर करोगे, यू विल सी अगर आपने सिर्फ इन दो को ही बनाया है आउट ऑफ 10, आपने 10 में से 2 को कन्वर्ट करा है, मतलब 10 फीचर्स को 2 में कन्वर्ट करा है, यू विल सी दैट 96% तो यही काम कर रहा है. सेकंड वाला तो सिर्फ 4% काम ही कर रहा है. मतलब बहुत कम काम करता है सेकंड वाला. मेन सारा काम ही PC1 कर देता है. कंट्रीब्यूशन सारा अपना PC1 ले लेता है. तो वही चीज यहाँ पे रखी है दैट प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 विल बी रिस्पॉन्सिबल for holding maximum information about the original feature set, and the remaining information can be obtained from the other principal components. Obviously PC1 के पास अगर 96% आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि PC2 के पास कुछ नहीं है, या फिर PC2 के पास अगर 2 है तो हो सकता है PC3, PC4 इनके पास भी 1%, 0.5%, 0.5% ऐसा करके वो बेचारे 4 जने मिलके 4% बना रहे हैं, और यहाँ पे ये अकेले 96% लेके बैठे हैं. इसका मतलब यही है, मतलब आखिरी 2 पॉइंट्स का. Now, I mean, again, same thing is represented here in a graph form. Arbitrary values हैं, but here you can see that principal component 1 is contributing 40%, principal component 2 is contributing 18%, 3 is contributing 15%, 4 is contributing 8%. तो मतलब जैसे जैसे आपके प्रिंसिपल कंपोनेंट आगे जा रहे हैं, हमारा वैसे वैसे कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है फॉर ईच प्रिंसिपल कंपोनेंट इन ए आई मीन इन दिस ग्राफ. ठीक है. तो आपके जो आपके वेरिएंस हैं, परसेंटेज ऑफ एक्सप्लेन्ड वेरिएंस, मतलब यहाँ पे बस इतना है कि इट हैज बीन रिप्रेजेंटेड इन ए वे दैट कंट्रीब्यूशन इज बीइंग शोन. प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 एंड 2 आर कंट्रीब्यूटिंग अलोन अराउंड 60%. अगर आप थर्ड वाला जोड़ लोगे तो 75%, बट उसके बाद के बेचारे 7 जने मिलकर 25% कर रहे हैं. ठीक है. Now principal component analysis, geometrically it can be said that principal components are lines pointing the directions that capture maximum amount of information about the data. Now simply principal components are the new access to get the better data visibility. Obviously अगर आप इसको ग्राफ को दोबारा से ध्यान से देखो, now this PC1 and PC2 have been drawn on this 3D plot also. ठीक है. तो अगर आपने सिर्फ प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 और 2 के ऊपर आप फोकस करो तो आप देखोगे कि इसका एक्सिस अलग है. नीचे वालों का जीन 1 2 3 का एक्सिस अलग था, PC1 PC2 का एक्सिस अलग है. तो उसी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे दैट दीज आर द न्यू एक्सेस टू गेट द बेटर डाटा विजिबिलिटी. आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर रहे हो टू गेट द बेटर विजिबिलिटी. Now this is the mathematics behind the principal component analysis. इसमें 5 स्टेप होते हैं. आई थिंक हाँ यस 5 ही हैं. तो स्टेप वाइज वर्किंग ऑफ PCA, दीज आर द 5 स्टेप्स. सबसे पहले यू विल हैव टू फाइंड द कोवेरिएंस. ठीक है. ओके, टाइम इज अप, नो वन टोल्ड मी. We will do this mathematics tomorrow. Okay, in the next class we will discuss the mathematics of PCA. That's all for today. Okay, thank you.